Agitated farmers in Maharashtra are nearing Mumbai in their quest to hold talks with government on their woes on falling prices of crops. Now, Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde and his deputy Devendra Fadnavis will meet the farmers shortly today, where the farmers will highlight their falling price woes. Now, the foot march from Nashik has entered the political turf of CM Eknath Shinde in Thane, and the farmers are expected to hold protests outside Vidhan Bhavan during the ongoing budget session. The issue of the falling onion prices has also been raked up in the assembly, with MLAs protesting with onion garlands. Maharashtra's farmers from Nashik area have taken a march towards Mumbai, and as you can see right behind me, we are at Nashik-Mumbai highway, and as you can see, there are farmers in thousands and thousands of number with their red cap asking and demanding their justice and their rights. As they mentioned that when they have the right to vote, then they also must have the right to have access to the government policy. And as we can see through the visuals, that not only there are male farmers but also the women farmers, those have arrived and gathered here, and as you can see from all age group, women have come here, and they clearly say that they are going to go till the Vidhan Bhavan and are also going to put forth their 16 demands, those who include the equal rights for home, the kind of several other demands, those are imposed before the government. Though there are a series of meetings today, the Chief Minister, Deputy Chief Minister and the Agriculture Minister is going to meet these farmers. But to give you the glimpses as to what is exactly happening, as you can see, these are the people with the red cap, with the water bottles here, are prepared. And as you see, one of this visual will also give you the glimpses. Look at the legs of the farmers. Look at the legs of the farmers. Will show you. And then they are walking from 5 days. क्या मांगे हैं आप लोगों की? जमीन मांगे। जमीन मांग रहे हैं। जंगलों के क्षेत्र में आपको घर चाहिए? घर भी चाहिए ना। घर भी चाहिए, कर्ज माफी भी चाहिए। कर्ज भी माफी चाहिए। आपके पैरों की हालत देख रहे हैं आप? हाँ, देख रहे हैं। कब से चल रहे हैं? ओ आज कितने दिन हुआ? 4 दिन हुआ। 4-5 दिन हो गए। 5 दिन। आगे भी चलते रहेंगे? हाँ, चलते रहेंगे। हाँ, चलते रहेंगे। मांगे नहीं पूरी होंगी? नहीं होंगी। गावित जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल है कि कल जो मीटिंग हुई वहां पे दादा भुसे जी ने कहा कि हम एक पॉजिटिव डिमांड जो है वो डिमांड की तरफ एक पॉजिटिव हमने साइड दी है, तो आप क्या देखते हो, किस तरह से देखते हो, क्या बातें हुई कल मीटिंग में? कल जो हमारी मांगे है, तो कल दादा भुसे साहब आए थे, सावे साहब आए थे और पवार साहब MLA, वो तीनों लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए थे और उसने प्रस्ताव रखा कि तुम्हारी मांगे जो है वो प्राइमरीली यहाँ हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो पहली बार उसने एक एक मांग करके यहाँ डिस्कस की। कुछ मांगे ऐसी ही निकली कि वो बोलते थे, बोले ये इसका हल निकल सकता है, और कुछ मांगे गवर्नमेंट के पास चलने के बाद संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री के सामने ये क्या निर्णय लेने का वो वहाँ तय करेंगे। तो हमें लगता है कि उसमें से जो मांगे हमने टॉप प्रायोरिटी में रखी है। कौन सी मांगे है जो टॉप? अपने किसानों का प्याज का सवाल है, किसानों के लाइट का सवाल है, किसानों के कर्जा का सवाल है, फॉरेस्ट लैंड का सवाल है, और 2005 के बाद वो जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनका वो पुराने पेंशन का सवाल है, आंगनवाड़ी के कर्मचारियों का सवाल है, रेशन धान्य का सवाल है, और दूसरे जो मांगे हैं उसके ऊपर चर्चा हुई।